अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन सय्यदिना व नबियना अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिजसा व तहिरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन करम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको महफ़िल-ए-वलायत ह्यूस्टन स्टूडियो से वेलकम करते हैं। आपके सामने प्रोग्राम महफ़िल-ए-वलायत लेकर हाजिर हैं। और जैसा कि आपसे लास्ट वीक बात हुई थी और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमने टॉपिक शुरू किया था, एंड दैट रिलेट्स टू आवर दैट लाइक हमारे आजकल की लाइफ से उसका बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। एवरी मिनट हमारा समझ लीजिए उस टॉपिक से कनेक्टेड है, एंड वी कैन नॉट इमेजिन अ लाइफ विदाउट दैट। डिजिटल मीडिया की तरफ मेरा इशारा है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह बफ़ज़्ल ताला परवरदिगार आलम के करम से इस टॉपिक को आपके सामने शुरू किया। और बात यह है कि इसका मतलब ये भी नहीं ज़ाहिर है कि डिजिटल मीडिया लाइक आई सेड इट्स अ टूल। और टूल जैसे कि एक नाइफ़ भी एक टूल होती है, लेकिन यानी छुरी जो होती है एक टूल है, बट वी यूज़ द नाइफ़ वेन एवर इट्स नीडेड एंड वेयर एवर इट्स नीडेड। जब उसे ज़रूरत के अलावा किसी जगह इस्तेमाल किया जाता है तो वो फिर ख़तरनाक या नुकसानदेह साबित होती है। इसी तरीके से डिजिटल मीडिया आजकल की ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगियों में एक बहुत ही अहम टूल है। इट्स लाइक आई सेड इट हैज़ मेड द वर्ल्ड लाइक अ ग्लोबल विलेज। और बिल्कुल इट्स एन इंफॉर्मेशन हाईवे जिस पे हम वी आर ऑल द टाइम ट्रैवलिंग, एंड वी हैव सो मच नॉलेज, एक्सेस टू सो मच नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़ and the happenings in the world, every second in the world we have access to that, alhamdulillah. So it's a great tool, it's a great advancement, and like I use this sentence that we are lucky that we are enjoying the digital media in the life of today. लेकिन उसके साथ साथ ही आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि एक तरीके से हम इसको enjoy भी करें, बट ऑन दी अदर हैंड हम इस कश्मकश में मुब्तला रहते हैं कि इसमें हमारा वक्त बहुत ज़ाया हो रहा है, या इसके नुकसानात क्या क्या हैं, या सेल फ़ोन का यूज़ हमें जो है बहुत सारी चीज़ों से हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो इस हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं और इसको आज कंटिन्यू करेंगे, और मे बी ओवर कमिंग 2 और 3 प्रोग्राम्स हम लोग इसी पे बात करेंगे। एज ऑफ नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग, या थोड़ी सी जो नेगेटिव या डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया जिनको हमें एक्चुअली दैट वी हैव टू कीप इन माइंड इन ऑर्डर टू टेलर आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू दैट, ताकि हम उसको उन चैलेंजेस को उसी तरीके से हम डील करें इंशाल्लाह। आज हमारे साथ, मैं इससे पहले के प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। और सोशल मीडिया चूँकि यूथ के हवाले से मैंने कहा था कि ज़्यादा हमारा फोकस जो होगा हमारे यंगर जनरेशन होगी, गो के इट ऑल्सो इफ़ेक्ट्स इक्वली if not more to the adults also, to all generations, to all ages, but चूँकि हम बच्चों की तरबियत के हवाले से हमने इस गुफ्तगू का आगाज़ किया था, and the kind of challenges that we are facing, और यूथ का तस्करा था, तो आज हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड पे we are lucky to have sister Rabab Jafry with us. I would like to welcome her. अस्सलामु अलैकुम रबाब। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? I'm good. कुछ आप बताना चाहेंगी अपने बारे में नाज़रीन को? Would you like to tell something about yourself? What do you do? Which grade are you in? So, my name is Rabab Jafry. I am currently in 12th grade, so I'm in high school, my last year. And I also use social media, so I feel really glad that I can come up here and talk to everyone about that. And I think Rabab, it will be very interesting for me and for our audience here that to talk to a youth, a representative of youth, and talk about the social media and the kind of challenges that मैं जो अपनी बात कर रही हूँ, what we are talking and discussing based on different researches, and I'm sure कि when I share those researches with you, I'm sure you will be amazed too. And by the way, she is my daughter, and
I would just tell you that if you don't agree with me at some point, you're free to say that. So please don't hesitate to mention if you don't agree with me at some point. So इंशाल्लाह रबाब अपनी गुफ्तगू का हम बात का आगाज़ करते हैं. पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लाइक यू सेड यू यूज़ सोशल मीडिया, यू यूज़ द डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स. उसमें आप दिन में अंदाज़न कुछ सवालात मैं पूछूँगी दैट आर काइंड ऑफ how much time do you think you spend on average on social media or on your, like, which is the device you use most? First of all, tell us that. Well, the device I use the most is my phone. And I say I'd spend maybe 2 to 3 hours every day on social media, which I think when I look back at it, it sounds like a lot. So, and from like I think it's a lot of and do you think all that time that you're giving to your phone on social media, all that time is 100% productive, 100% you're engaging in learning activities, or it's mostly just entertainment? I would say to be honest, when I use social media, most of the time it's for just to have fun, just kind of besides the day of work that I have to do, it's just kind of a point for me to relax and, have fun. So yeah, mainly for those purposes. So like connecting with people, talking to friends, and using social networking sites to connect with people. Yeah. So I think that 2 to 3 hours is really a lot of times. And actually, Nazreen, last time जैसे बात हुई थी कि we can actually, maybe somebody can come up with an application to actually calculate the time that we are using on these social networking, because होता ही है कि हम लोग दिन में randomly कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी maybe 1 घंटा we are using these social networking sites, and it's really unable. Waqatan, do you think it's easy to actually keep track of how much time you are spending on it? No, it's not easy, it's right? not Because easy, it's so much broken up, in different throughout the day from the time you wake up. Is it the first thing that you look? I mean, it's a question that we ask usually ourselves, just to figure out whether we are addicted to it or not. When you wake up in the morning, what is the first thing you do? Well, when I wake up, the first thing I do is, check my phone if I got any messages or anything. So yeah, that's a typical answer that we will, I think, probably. But Rabab, at this point, I would really like to point out one thing, and which we will work on it together, inshallah, and you all too, that there is a brain trainer, I don't remember his name, inshallah next program I'll mention his name, but he mentioned that the first thing, morning mein jab hum uthe, so we have to, the most important tool that we have in our body is our brain, and morning mein hamara objective hi hona chahiye that we get our brains ready to absorb all different kinds of knowledge during the day and to use it in the best possible, because brain is actually the operating, जिसे कहते हैं ना हमारी पूरी body का जो central processing unit है, that's the brain. So how we are power starting our day with activating our brain in the right way. Now he mentioned one thing, that he said the first thing a lot of people nowadays they're doing is, first thing they do is they wake up and they check their phone, and that phone does two main things. He mentioned, he said that एक तो ये distractions cause करता है और एक reaction cause करता है. So first of all, it's distracting us from our daily routine जो हमारा morning का होना चाहिए. It kind of distracts us from that. And number two, reaction. For example, कोई ऐसे messages, वो happy reaction भी हो सकता है, वो sad reaction भी हो सकता है. So हमारे body में instead of getting the brain tuned up for the day, getting the brain boosted up or started for the day, what happens is with the use of the phones that is we are checking the messages or other websites, the first thing that we do in the morning, and at that point of time it's either serving as a distraction or it is causing a form of reaction. So he highly recommended, that's a person that is actually hired for training brains in different companies, different groups of people, उनकी mental brain training के लिए that person is hired, and he recommended that if you're doing that, कि first thing in the morning you're checking your messages, that is not the right thing. At least give yourself an hour
जो आपकी दूसरी suggested activities है morning की, do that, and after 1 hour you check your phone, unless आपकी job requirement है, that is of course a separate issue, but starting the day with checking the phone is not the right approach to start the day. तो ये तो बात यहाँ पे हो गई. फिर let's talk about the end of the day. Is it the last thing that you do when you go to bed, or sometimes, not all the times? I believe most of the time I do use like my phone. I use social media, see what's going on, and then I go to bed. So okay, and do you think, Rabab, okay, again इस पे भी नाज़रीन हम बात करेंगे कि किस तरीके से it can cause stimulation, and आपको अभी will come to that, Rabab, actually, कि किस तरीके से जब हम ये social media before we go to sleep we are using it, how it negatively impacts our sleep, and that is also based on research. तो रबाब, आप ये बताइए कि in the age of today, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, बल्कि I remember कि you also when you were younger you used to go outside and play, right? But nowadays when we go out we don't really see a lot of children playing outside. Do you see that? I mean, all the streets are empty, and how do you feel about that? I mean, is it like it's a lot different from when it used to be, because I remember when I was in elementary school, what used to happen was me and my neighbors, we would play outside almost every single day, and back then I didn't even have a phone, so we used to like have a lot of physical activity, and we would have a lot of fun, and we wouldn't be attached to our phones. But now when I look at kids like who are my age, like in elementary school, I see like instead of playing outside, they tend to use technology. They're either on their tablets, and what else they're using? And their phones and stuff. Like for example, one time I'll relate an example that I was volunteering for this Urdu school, and it was recess time, and I was outside with the kids. And what happened was most of the kids, instead of, or like probably like half of them, instead of playing outside with the other kids, they were under the shade and they were using their devices. So I really feel like as technology has advanced, our world has changed, and now people my age, instead of going out, playing outside, or doing any physical activity, instead they're occupied in social media. That's kind of like the thing for us now, instead of And even at school, what do you notice? Like when, people, like for example, when I tell your brothers to not to use phone in the morning when I drop them off early, but they say, Amma, everybody is busy on their phones. I mean, there's no real socializing going on, right? What do you feel about that? Yeah, I would agree with that. Like, I can also agree, like if I'm at a dinner or something like that, people will tend to be on their phone, like family dinners. Sometimes, me and my brothers were always occupied in our phones, and our parents are always telling us, come on, it's a family dinner, we have to talk to each other. We shouldn't always be on our phones. So I feel like, we're getting more engrossed inside that. So do you think we can, like, as a parent, I'm asking, do you think is there something we can do to kind of limit? Do you think that's a good thing? First, let's decide, is that a good thing or bad thing? I don't think it's a good thing to be on your phone all the time. I feel like you should, whenever it's time to socialize, you should socialize, when you're with your family, you should talk to them instead of being on your phone. And I feel like it's a waste of time if you're on your phone when you could be talking to your family, because socializing is very important, but it should be done in person. And do you think, Rabab, like actually physically socializing with people, talking to people is more rewarding than socializing on the phone? Like even on social networking websites, we are socializing, right? We're talking to friends, messaging them, looking at their pictures, and sharing experiences. But one thing is that, and the other thing is we are actually physically talking to a friend. We are actually sitting with her and sharing our experiences. What do you think is more rewarding, the socializing on social media or like the physical meeting with a friend? In my perspective, I think it's I like socializing with friends in person better, because I feel like, I don't know what it is about the experience, but it makes it more meaningful. I feel like it allows you guys to connect more, versus because there's like a screen dividing you guys. Whenever if you text your friend on social media or whatever, there's like a screen that's like kind of blocking your to how you can express yourself. So I feel like
in person it allows you to express yourself better and get your feelings across because there's no barrier that's dividing the two of you. So I think that's a really beautiful point, Rabab. I would really appreciate. That's a beautiful thing that you just said, that when you're socializing on social media, there's that screen in between you and the friend, and when you're actually with your friend, there's no barriers in between, so that you can actually feel that difference. And that is like you pointed out, at family dinners and recess and time, and morning when parents drop off. I think at that time when kids have their, like, even I'm telling you, my mere bachche jab main unhe like on every day they got a new device, a gaming device, and they're fighting over it ke ek din main leke jaunga, ek din tum leke jaoge. I mashallah 2 sons, and they are why they wanted, because उनका कोई फ्री टाइम है, उनकी एडवाइजरी में उन्हें टाइम मिलता है या उन्हें बस पे टाइम मिलता है, तो they want to use that device on the bus or during advisory time. Sometimes I allow that, sometimes I don't, because I want them to when they're on the bus या एडवाइजरी में जब वो मौजूद होते हैं, जब उनके पास, या इन सम स्कूल्स दे हैव लिमिटेड access to digital media during school time, but there are times during the week when they do allow. लेकिन उस वक्त में सारे बच्चे, what my sons tell me, that even if we are not using our gaming device or our phone or something like that, the other kids, all the other kids, they are busy on their phones or their gaming devices, something like that, if there's any such opportunity. And even on the bus, if some kid has a gaming device or an iPad or a phone, or they have some mode of digital playing device, then all the kids tend to be focused on that. So that is kind of a attitude, because I know कि digital media के अंदर, of course, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो या गेमिंग हो, a person is enjoying, like I know even adults, they are busy playing different games on phones, right? And when they are waiting, instead of अगर पहले हमारे पास फ़ोन नहीं होता, and if we were sitting outside a doctor's office waiting for a turn to come, we would just try to talk to another person, talk to each other about weather and this and that. But now what happens is we are just busy with our phones, and we don't really look around to talk to people. Do you think that's true? Yeah, I would agree. Like if I go to like the dentist office, or if I go to the doctor's office, that's usually in the waiting room. People are just, they're right next to each other, but they don't talk to each other at all. It's like the other person doesn't exist. Instead, they're on their phone. So I feel like that's definitely something that's going on these days. So it's like kind of ये जो पूरा pressure है, ये पूरा इस environment के अंदर ये पूरा pressure है, and it's kind of, नाज़रीन, इसीलिए इस प्रोग्राम का हमने जो title रखा या इसका topic जो रखा, challenge रखा, it's a real, and we really have to feel that challenge, and we have to really fight that battle कि हमें जो है इसको, इस प्लेटफॉर्म को पॉजिटिवली यूज़ भी करना है. हम टोटली वी कैन नॉट शट आवर सेल्व्स ऑफ फ्रॉम दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जो कि हमारे लिए इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए, लर्निंग के लिए, हमारी प्रोग्रेशन के लिए, हमें न्यूज़ इससे पता चल रही है, हमें डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ का इस मीडिया के थ्रू ही पता चलता है, हमें जो है वो नॉलेज के डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इसी मीडिया के थ्रू वी आर एबल टू एक्सेस दोज. सो वी कैन नॉट जस्ट लीव दिस असाइड एंड से ओके, आई एम नॉट गोना यूज़ माई सेल फोन और माई लैपटॉप और माई टैबलेट एनीमोर. नो, वी कैन नॉट डू दैट, बिकॉज इफ़ वी डू दैट देन हम अपने आप को बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों से महरूम कर देंगे. बट ऑन द अदर हैंड, ये जो इसकी नेगेटिविटीज़ हैं, दे आर काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग फॉर अस एंड फॉर आवर यंगर जनरेशन. अब इसको थोड़ा सा हम अपने टॉपिक को इस तरफ मैं रुख देना चाहूँगी कि इसके हेल्थ हैज़र्ड, जो हमने ये बात की ना, कि जैसे रबाब ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि रिसेस के वक्त, like you said, कि बच्चे would like to sit under the shade and play on the phones instead of playing outside in the playground. So playgrounds usually आजकल हमें खाली नज़र आते हैं, हमें घर के बाहर के जो इलाके हैं वहाँ पे बच्चे खेलते हुए नज़र नहीं आते. मैं ख़ुद ये डिफरेंस फील करती हूँ, लाइक मे बी 10 years ago और 7 years ago बाहर बच्चे खेलते हुए, साइकिल चलाते हुए और भागते दौड़ते नज़र आते थे. लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हमारे महल्ले, नेबरहुड जो है वो बिल्कुल वीरान होते हैं. वाई? बिकॉज ऑल द किड्स आर इनसाइड एंड दे आर बिजी प्लेइंग ऑन देयर टेलीविज़न पे, या जो भी वो गेमिंग वगैरह कर रहे होते हैं या फ़ोन पे होते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है नाज़रीन, एक बहुत जो
आजकल की मॉडर्न जो हमें रिसर्चेस हमें नज़र आती हैं, ये नॉर्थ अमेरिका में ओबेसिटी यानी कि मोटापे का जो रुझान है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो है वो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और जो BMI, जो बॉडी मास इंडेक्स होता है, वो जो एवरेज BMI है वो 25 से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो कट ऑफ पॉइंट है 25 के बाद जो है ओवरवेट और ओबेसिटी के क्राइटेरिया शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि एवरेज BMI का जो है वो लेवल जो है वो ऑन एवरेज जो है वो मोर देन 25 होता जा रहा है। और टीन्स जो हैं, यानी कि I think Rabab was a little conservative in her numbers when she said 2 to 3 hours, but if we actually calculate, and that this is a calculated average, on average the teenagers, if we include the tablet time, we include the television time, we include the phone time, we include the gaming time, everything put together, the teens are spending more than 7 hours. दिन में हमारे जागने का जितना टाइम होता है उसमें से मोर देन 7 आवर्स द टीनेजर्स इज स्पेंडिंग ऑन स्क्रीन। और बच्चों के हाथ में बड़ी उन्होंने खूबसूरत बात की कि बच्चों के हाथ में बजाय बेसबॉल बैट के अब जॉयस्टिक होती है, सारा जो उनका गेम होता है वो जॉयस्टिक के थ्रू होता है। अच्छा, फिर उससे इसमें हमें नाज़रीन ये तो हमारे पास एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। एक्सरसाइज का हम देखते हैं कि एक्सरसाइज के हमें बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मिलते हैं। जब बॉडी जो है वो मूव करती है तो एक्सरसाइज मोड में होती है, उससे जो है इन बच्चा या कोई भी इंसान एक तो डिप्रेशन में जाने के उसके बहुत कम चांसेस होते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, और उसके अंदर जो एंग्जाइटी लेवल होती है वो एक्सरसाइज से ये खुद ब खुद, एक्सरसाइज जब इंसान कोई कर रहा होता है तो उसके ब्रेन में कुछ केमिकल्स जिनका नाम एंडोफिन्स होता है वो रिलीज़ होते हैं, एंड दोज एंडोफिन्स गिव अ sensation of being happy, and a person feels good about himself or herself when they're exercising. So they feel good, there's decreased chance of depression, there's decreased chances of anxiety, the mood is better, और ये एंडोफिन्स की वजह से मूड भी बेटर होता है, मेमोरी भी बेटर होती है और स्लीप भी बेटर होती है। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा इंडिविजुअल के जिसका जो है मूड बेटर है, जिसकी मेमोरी बेटर है, जिसकी स्लीप बेटर है, हु इज़ नॉट डिप्रेस्ड, हु इज़ नॉट एंग्शियस, वर्सेस एन इंडिविजुअल हुज जो है वो एंग्जाइटी भी उसके अंदर बहुत है, उसके अंदर डिप्रेशन भी आ रहा है, वो डिप्रेस हो रहा है और उसकी मेमोरी जो है उसमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि ब्रेन पे इसका ये इफेक्ट होता है कि मेमोरी जो है हमारी लॉन्ग टर्म वो आजकल बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है बेस्ड ऑन रिसर्च, बिकॉज ऑफ दिस एक्सेसिव यूज़ ऑफ, आई विल ऑलवेज यूज़ द वर्ड एक्सेसिव यूज़ ऑफ डिजिटल मीडिया। तो क्या होता है कि मेमोरी पे हमारी फ़र्क पड़ता है और स्लीप पे हमारी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इन दोनों इंडिविजुअल्स को जब हम कंपेयर करेंगे, ऑफ कोर्स वो इंडिविजुअल हु इज़ लेस डिप्रेस, हु इज़ फीलिंग हैप्पी, हु इज़ अ बेटर मेमोरी एंड हु हैज़ अ गुड स्लीप पैटर्न वुड बी मोर अट्रैक्टिव, एंड वी वुड लाइक टू फिट इन दैट पिक्चर मोर एज़ कम्पेयर टू द अदर पिक्चर दैट आई जस्ट प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू। तो इन दोनों में से बेटर पिक्चर इज़ बिकॉज ऑफ, अगर हम सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इंडल्ज करते हैं अपने आप को, तो फिर हम एक्सरसाइज से जो है वो खुद ब खुद, स्पेशली बच्चे कि जब वो गेमिंग पे आ जाते हैं तो फिर उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा जो है रिड्यूस हो। आज माँ बाप यहाँ पे पेरेंट्स हमारे साथ प्रोग्राम देख रहे हैं, आप अग्री करेंगे कि पहले बच्चे जो हैं वो शौक़ से कहते थे कि मैं साइकिल चलाने बाहर जा रहा हूँ। आज जो है बच्चों को पुश करके ज़बरदस्ती उनको भेजना पड़ता है कि जाइए और आप बाहर जाके 2 चक्कर साइकिल के कम से कम लगा के आइए, या कम से कम साइकिल नहीं करें तो आप ट्रेडमिल कर लें। जस्ट गेट योर बॉडी मूविंग, कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आपकी होनी चाहिए। रब, आप इस सिलसिले में आप क्या कहेंगी? Yeah, I would completely agree with that. Nowadays we really have to push people to exercise and do these type of things, especially like I can relate with myself. My mom, she's always telling me and my brothers to exercise and do the treadmill every day, and then we're all like, oh, because we're busy using our phones or we're doing anything else, we're just we don't feel like doing exercise, but like my mom was mentioning before, that exercise really makes you feel good. So I came into this routine. I didn't have much to do, so I started doing the treadmill, and when I did it I felt so much better. Like I can't even describe the feeling that I felt, because it just felt so good,
And because also I'd like to add is like when a human that I've noticed is when you do something productive, it makes you feel good. If you stay on social media or do anything that's not productive, that's wasting your time, then you kind of feel like you've lost the time, that you don't really feel good. And so coming back to the exercise, whenever I exercise, it brings me good feelings. I feel like I've done something productive that day versus staying on my phone or doing whatever. So it's a good thing. So do you plan to start again and put it back into, at least if we are not doing it every day, then maybe at least 3 times a week हमें करना. And one of the things that the brain trainer that I was talking about, he told was that morning में आपका routine होना चाहिए कि आप कम से कम 10 minutes आपकी जो है exercise होनी चाहिए. तो what we started in our home and which we are trying to be persistent about it, but it kind of everybody I feel like is reluctant to move. Everybody just wants to sit in the sofa and be on the phone and have fun. तो जैसे कि आप 10 minutes को भी छोड़ दीजिए. For example, if you have a treadmill in your home, आप 3x3 for example, we started that कि भाई 3 minutes के लिए ही आप 3 miles per hour पे you just run, make a run for 3 minutes for 3 miles per hour, and at least it is something, and something is always better than nothing. So we have to kind of, अगर हम हर रोज़ नहीं कर पा रहे, हर रोज़ सिर्फ 10 मिनट निकाल नहीं पा रहे, तो हम कम से कम हफ्ते में 3 दफ़ा एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में लाएं. ये हमारा नाज़रीन, ये हमारा टू बी हमारा मज़हब जो है, इट प्रमोट्स अ वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन. वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन हमारे मज़हब में, दीन में हमें ये प्रमोट किया गया है, हमें इनकरेज किया गया है कि हम ये सारे मसलन स्विमिंग है, मसलन आर्चरी, ये सारी चीज़ें हम जो है सीखें. इससे हमें एक इंसान को जो है वो फिज़िकली जो है फिट होना चाहिए. और कभी भी हम अगर इफ़ वी बिकम अ काउच पोटैटो, जो एक वर्ड यूज़ होता है कि वी जस्ट आर सिटिंग ऑन द काउच डूइंग जस्ट web surfing or surfing through the social media sites, then it's just really, like she said really really beautifully, बहुत अहम चीज़ नाज़रीन कि जब हम कोई प्रोडक्टिव, थैंक यू सो मच रबाब, यू ब्रॉट अप अ वेरी वेरी गुड पॉइंट, कि जब भी हम कोई एक काम ऐसा प्रोडक्टिव फील करते हैं तो एट द एंड वी गेट अ रियली गुड फीलिंग. एंड ऑफ द डे वी हैव दैट सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट कि वी डिड समथिंग. वेयर एज इफ़ वी जस्ट वेस्टेड आवर टाइम, उसी सोशल मीडिया को अगर हमने सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया है, सिर्फ और सिर्फ उस पर हमने अपना टाइम ज़ाया किया है, तो फिर एट द एंड दो 7 hours और 3 hours और 2 hours स्पेंट ऑन सोशल मीडिया, जो पूरे दिन का एक ओवरऑल इम्पैक्ट है, उसमें सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट इंसान इतना नहीं फील करता है. सो ओवरऑल वी आर यूजिंग इट, वी आर enjoying it at the time, we don't want to let it go, but from inside वी आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट. ये आपने भी यकीनन महसूस किया होगा कि हम जब ये टाइम को ऐसा महसूस होता है कि हमने सिर्फ ज़ाया किया, उसका कोई नेट प्रोडक्टिविटी नहीं हुई है, तो फ्रॉम इनसाइड वी आर नॉट रियली हैप्पी. जबकि हम कोई प्रोडक्टिव काम करते हैं तो वी फील ऑलवेज गुड अबाउट इट. तो वन थिंग दैट हाउ टू फेस दिस चैलेंज इज़ कि on one hand if we are using, like I said, that we cannot just give it away, it is something that we need in the life of today. लेकिन ये कि on the side हम अपनी exercise routines को भी like we plug it in our day at the right times wherever needed, और जितने देर के लिए ज़रूरत है बस उतना ही हम उसको यूज़ करें, उससे ज़्यादा एक्सीड ना करें. इतना कम से कम नहीं होना चाहिए कि हमारी गुड हैबिट्स जो हैं वो इस पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए. एक और बात जो बच्चों के हवाले से नाज़रीन, जो बच्चे गेमिंग वगैरह के शौकीन होते हैं, उसमें स्टडीज़ हैव शोन, एंड एक्चुअली प्रोफेसर मार्क रेने की, हु इज़ द चीफ डिवीज़न ऑफ साइकोलॉजी एट नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, ही प्रपोज दैट जो एक्सर गेमिंग होती है, एक्सर गेमिंग आई वुड से, जैसे कि कुछ गेम्स होते हैं जिसमें वाकई आप यू आर वर्चुअली प्लेइंग टेनिस, यू आर वर्चुअली प्लेइंग गोल्फ, यू आर वर्चुअली प्लेइंग बेसबॉल एंड बास्केटबॉल, वर्चुअली आप खेल रहे होते हैं. ही सेड दैट ये वाले जो गेम्स होते हैं इनके अंदर जो एनर्जी यूज्ड होती है वो एटलीस्ट ट्वाइस द एनर्जी जो इंसान बैठे बैठे सिर्फ जॉयस्टिक से गेम खेल रहा होता है, उससे डबल एनर्जी यूज़ होती है. सो इट्स बेटर, अगर गेमिंग का बच्चों को आपके शौक़ है तो उनको इस तरह के गेम्स में, जो कि स्पोर्ट्स ओरिएंटेड गेम होते हैं, उसमें इन्वॉल्व करें. उसके 2 फ़ायदे होते हैं. एक तो ये फ़ायदा होता है कि
मतलब इसका मकसद ये नहीं कि बच्चे सिर्फ उसी में इन्वॉल्व हो जाए, नहीं, ऑलवेज टेनिस playing physically is much better, there's no comparison than exert gaming. But instead of joystick पे जो games use होते हैं उसकी बजाय अगर हम एक्सर्ट गेम्स में बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, उसका एक तो फ़ायदा होगा, उनकी बॉडी मूवमेंट्स थोड़ी सी ज़्यादा होंगी. सेकेंड थिंग, इट गिव्स अ टाइम फॉर देम टू सोशलाइज. वुड यू अग्री विद दैट, Rabab? Yes, I would agree with So that. like when you're playing, for example, you're playing tennis, you have a partner that you're playing with, so you're actually like mom and dad can participate, right? They can play golf, खेल रहे हैं, या there's a sense of competition, there's some socializing going on, there's actually some physical socializing going on, there's some physical activity going on. So he says that it is exergaming is better than the regular gaming that our children are using nowadays. अच्छा, फिर उसके बाद एक स्टडी जो यूके में हुई बहुत इंटरेस्टिंग, कि 2/3 ऑफ स्कूल चिल्ड्रन दे हैव नेक एंड बैक पेन, राइट. बच्चों में पहले ज़माने में इतना कोई ये कमर में दर्द और गर्दन में दर्द, and a lot of kids are not really complaining about, they have that pain but they are not really saying anything about it. Some of the children, they actually come up to their parents and actually complain कि भाई हमारे गर्दन में दर्द हो रहा है या हमारी कमर में दर्द होता है, लेकिन a lot of children would not even come up and उनको दर्द हो रहा होगा and they would just be quiet about it. And why? Because जब हम कंप्यूटर पे बहुत देर तक बैठे होते हैं तो हमारी गर्दन और हमारी कमर का एक ख़ास एंगल बन जाता है, जिसकी वजह से, देखिए यूके में स्टडी उन्होंने कहा कि 2/3 ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन हैव बैक एंड नेक पेन इश्यूज़, जो कि ये नेक और बैक पेन इश्यूज़ बच्चों वाले इश्यूज़ नहीं है, तो एक लाइक मिडिल एज और ओल्ड एज पीपल के इश्यूज़ हैं. एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात जो रबाब आई वुड लाइक टू शेयर, के वाईफाई और जो सेलफोन रेडिएशंस हैं, दे कैन एक्चुअली कॉज कैंसर. 2008 की एक स्टडी आई वाज गोइंग थ्रू, डॉक्टर लेनार्ट हार्डवेल फ्रॉम यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इन स्वीडन, ही सेड दैट सेल फोन यूज बिफोर 20 ईयर्स, एक्सेसिव सेल फोन यूज बिफोर 20 ईयर्स ऑफ एज, 20 साल से कम उम्र के बच्चे अगर एक्सेसिव सेल फोन यूज़ करते हैं तो उनका जो इंक्रीज रिस्क ऑफ ग्लायोमा विच इज़ अ फॉर्म ऑफ ब्रेन कैंसर, the risk is 5% इंक्रीज़ अगर 20 साल से कम उम्र में बच्चे एक्सेसिव. क्योंकि होता क्या है नाज़रीन, कि जब छोटे बच्चे होते हैं उनकी ग्रोइंग एज होती है, उनके सेल्स जो है वो रैपिडली डिवाइड हो रहे होते हैं. एट दैट पॉइंट अगर उनको टू मच रेडिएशन, हालांकि वाईफाई इज़ अ वेरी जिसे कहें कि बेज़रर, तकरीबन बेज़रर तो नहीं कहूँगी, इसका ज़रर है, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशन की काइंड नहीं है, बट स्टिल अ लॉट ऑफ एक्सपोजर टू दिस काइंड ऑफ रेडिएशन which is coming from cell phones and Wi-Fi, उससे क्या होता है कि under 20 years, he says, according to this study conducted in 2008, that is 5% increase in the risk of glioma, which is the brain cancer. After 25 years, the risk is still high. It's 3 times more. Excessive जो यूज़ करते हैं उनके अंदर ब्रेन कैंसर का रिस्क जो है इंक्रीजेस बाय 3 टाइम्स जो है वो रिस्क बढ़ जाता है. बड़ी मज़ेदार मुझे ये फैक्ट्स मिले कि फ्रांस में जो है वो इस बात पे काम हो रहा है कि जो मैटरनिटी वार्ड्स और चाइल्ड केयर एरियाज़ हैं वहाँ पे बिल्कुल वाईफाई को कट ऑफ कर दिया जाए, वहाँ वाईफाई ना हो. फिर स्विट्ज़रलैंड के अंदर out of 6,800 schools, only 100 schools have Wi-Fi. Most of the schools, like 6,800 में से 100 schools have Wi-Fi, 6,700 schools have the wired internet connection. Russia में there has been a study, and according to that, excessive use of cell phones and long-term exposure to these kind of radiations, it decreases the cognitive function, like memory का और brain का जो function है, intellectual function जो है वो compromise हो जाता है with the use of excessive use of cell phones. फिर एक बात के ऊपर मैं फाइनली विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ हैज़र्ड्स, और बड़ी मज़ेदार से नाज़रीन जब आप पढ़ते हैं, when you actually go through these, you actually see these things actually happening around us, के बच्चों की डेवलपमेंटल स्किल्स होती हैं. लाइक बच्चा जो है वो एक एज पे जो है बैठना सीखता है, बच्चा की एक एज पे गर्दन ठहरती है, फिर ऐसा ऐसा बड़ा होता है तो वो डिफरेंट स्किल्स जो है वो लर्न कर रहा होता है. जब बच्चे जो हैं वो शुरू की उम्र से ही
ये सेल फोन्स में। नाज़रीन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका मतलब और मकसद ये नहीं है कि हम एक चीज़ को बिल्कुल रिजेक्ट कर दें, इसका मतलब ये है कि वी गेट आवरसेल्व्स अवेयर ऑफ द रिस्क, जो डेंजर है उससे हम अपने आप को रूशनास करवाएं और उसके लिए फिर हम एक्शंस लें। तो जो स्किल्स होती हैं डेवलपमेंटल स्किल्स, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं विद द यूज़ ऑफ दिस मीडिया। और उसमें एक बहुत जो मिसाल दी कि टीचर्स ने ये बताया कि बच्चे जो पहले ज़माने के, जबकि इतनी ज़्यादा डिजिटल एज नहीं थी, तो बच्चे जैसे सीजर्स के यूज़ में या डिफरेंट जो फाइन स्किल्स होती हैं बच्चों की, काट के चीज़ों को सही जगह पे चिपकाना, वो पहले ज़माने के बच्चों की बेटर होती थी। आजकल के बच्चे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन सीजर से फाइन जो कटिंग होती है, वो ना उसमें इतना इंटरेस्टेड होते हैं, ना उसके अंदर जो है वो उनकी इतनी प्रिसिशन होती है, इतनी ज़्यादा वो अच्छी तरीके से कर भी नहीं पाते। फिर एक बच्चा जो है जो स्कूल में दाखिल हो रहा है 2 से 10 साल का, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी between 2 and 10 years of age, बच्चे जो स्कूल में दाखिल होते हैं, they are able to handle a cell phone, they are able to handle a tablet, they can play video games, but they are unable to tie their shoelaces, they are unable to swim for example। तो basic जो skills हैं, tying your shoelaces is like a basic skill। लेकिन क्या होता है कि, और आजकल हमें convenience भी, एक मूवी आई थी, I don't want to say that the name of that movie, बच्चों की एक मूवी थी रबाब, आई थिंक यू रिमेंबर दैट मूवी, जिसमें एक रोबोट दिखाया गया था कि वर्ल्ड जो है पूरी डिजर्टेड हो गई है, अर्थ, और एक अदर प्लानट पे जो है वो पूरी एक बस्ती जो है इंसानों की बसी हुई है, लेकिन वो इंसान अजीब तरीके के इंसान है। रिमेंबर कि दे वर ऑल रियली फैट, दे वर नॉट एबल टू वॉक, दे वर ऑन देयर चेयर्स। उनकी मूवमेंट आप बताइए कि उसमें क्या होता था, एंड व्हाई डू यू थिंक दैट हैपेंड? The people on this other place, they were like people, they were like my mom was saying, they were really fat, and they couldn't even walk. Like, just imagine, all they would do is they would have fun. They would just literally, wherever they went, they would sit in a chair and move there, and they would all just move together, and they were really fat people, and they would have like TV screens in front of them and everything, and they would do nothing productive, and they would just sit around all day. And I kind of feel like this movie was actually a really influential movie for me and for kids, because it kind of showed the lesson that we shouldn't be too we shouldn't give up what it just kind of showed what the world is kind of moving towards. Now, I don't think that this kind of thing can actually happen where everyone's going to be fat and they're going to be like this, but it kind of showed us, it kind of gave a warning to us that what could happen if we continued our ways to an extreme level. Now, I'm not saying that we should completely cut off social media or whatever media, but I think that it should be used limited so we don't miss out on other opportunities. And like my mom was mentioning before, that kids who are aged 2 to 10 and they know how to use phones and everything, but they can't even tie their own shoelaces. So we're kind of, with using excessive media, we're losing the opportunity to do other things that would enhance essential skills. Like, if you don't know how to tie your shoelace at such a young age, then that's kind of going to be bad for you in the long run, So that's kind of just my perspective. And there are other skills. For example, the other skills that were mentioned were, for example, telling time, and for example, ride a bike. वाक़ईतन मैंने ये देखा नाज़रीन के बच्चे जो हैं, जो कि ज़्यादा मीडिया डिपेंडेंट है, ज़्यादा सोशल मीडिया, ज़्यादा फ़ोन, ज़्यादा टैबलेट डिपेंडेंट है। आप नोट कीजिएगा कि उनको साइकिल भी चलानी वो नहीं सीख पाते, जबकि पहले जो है, अब हम ये इट विल बी अनदर डिबेट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू राइड अ बाइक, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू टेल द time, to be able to tell a time, how important it is to tie your shoelaces. But these are fine motor skills, हमारे mind की भी, हमारे feet की और हमारे hands की, that as a human ये हमारी special skills हैं. They are not the only skills, but they are kind of representative of other special skills that are जिसे कहते हैं ना, survival skills. These are the survival skills. For example, if we are thrown in a deserted island with no connection to the internet, no connection to anybody, and then we should have these survival skills, basic survival skills. और उसकी वजह से जो मैंने इस मूवी के तरफ इशारा किया कि उसमें जब एक
इंसान बैठे बैठे ही उसके सारे काम हो रहे हैं, एक फ़ोन टच ऑफ अ बटन पे उसके पास पानी भी आ रहा है, खाना भी आ रहा है, उसके सामने टीवी भी है, चैनल भी चेंज हो रहा है, ही डजंट नीड टू गेट अप, he or she is getting their needs fulfilled at the touch of a button. तो over time, over 100 years, 150 years, those organs or those parts of the body, they become so deconditioned. और ये आपने भी नोट किया होगा कि अगर हम एक रूटीन में हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर किसी को रनिंग की या जॉगिंग की आदत है, लेकिन अगर वो 1-2 साल के लिए या चंद सालों के लिए इस आदत को छोड़ दे, दोबारा से वो भागना शुरू करता है, या हम और आप जिनकी बॉडीज़ इतनी डीकंडीशन हो गई, जब हम थोड़ा सा ही भागते हैं तो एकदम हमारी सांस जो है वो फूलने लगती है, सांस चढ़ने लगती है। उसकी वजह क्या है कि हमारी बॉडी इज़ नाउ नॉट यूज टू ऑफ रनिंग, और जैसे ही उस पर वो प्रेशर पड़ता है, एंड रनिंग इज़ लाइक एक एक्सरसाइज है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी बॉडी की फिटनेस के लिए ज़रूरी है। देयर इज़ नथिंग डिजिटल, लेट मी पुट इट दिस वे, देयर इज़ नथिंग डिजिटल दैट कैन ब्रिंग health to our body. There's nothing digital that can actually physically bring health to our body. Yes, we can find tips on the internet to eat healthy, to do this exercise or that exercise, but digital media itself or phone itself cannot bring health. That is actual eating, that is actual physical moving, that is actual physical socializing that will give health to our body and mind and soul. अपनी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा जो कि मैं आई वुड नॉट वांट टू स्किप दिस पार्ट आउट, कि स्लीप, एंड विद दैट वी विल फिनिश आवर डिस्कशन। लाइक रबाब ने पॉइंट किया कि बिफोर गोइंग टू स्लीप, और ये भी हम लोग की अक्सर हैबिट बन गई है कि हमें सोने से पहले एक दफ़ा अपने फ़ोन को चेक करना होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई वीडियोज़ आई हैं, कोई मैसेजेस आए हैं, वो वीडियोज़ हम देखते हैं, मैसेजेस देखते हैं, और उसमें अगर हम 10 बजे सोने के लिए लेटे हैं तो 10 से लेके 10:30, 11, 12 देर हो जाती है, और हम फ़ोन पे एक के बाद एक मैसेजेस या वो वीडियोज़ जो भी हमें आए हुए होते हैं वो हम देख रहे होते हैं। एंड टाइम का, आप अग्री करेंगे नाज़रीन, टाइम का पता नहीं चलता है कि टाइम कितनी जल्दी जो है वो गुज़र गया। और एक तो वक्त हमारा ज़ाया हुआ, दूसरी बात ये कि हमारी जो स्लीप हैबिट्स हैं, एक स्पेशली टीनेजर्स को और बच्चों को ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है। दे नीड 8 to 10 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी नाइट। तो क्या होता है कि जब उनकी स्लीपिंग टाइम कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो नेक्स्ट डे जो उनका दिन होता है, इट इज़ नॉट अगेन एज अ रिएक्शन दैट अदर डे उनके लिए इतना प्रोडक्टिव नहीं होता। उससे क्या फ़र्क पड़ता है इन अ नटशेल कि जब स्लीप हमारी पूरी नहीं होती, उससे अगेन हमारी मेमोरी पे इफ़ेक्ट होगा, अगेन हम ज़्यादा इरिटेबल होंगे, हम ज़्यादा चिड़चिड़े। क्या होता है रबाब, जब हम सो नहीं पाते सही से तो क्या होता है नेक्स्ट डे? इज़ दैट अ गुड डे एट स्कूल? व्हाट हैपेंस एट स्कूल? No, like I can relate that if I say if the night before, if I stayed up late, you know, on my phone or doing whatever, then, and if I have a lack of sleep, then the next day at school I'm like really sleepy, I'm like falling asleep in my classes and I'm not in a good mood and everything. So it really affects me. Like if I don't get enough sleep, this actually happens to most people. The number one thing people usually complain about is the amount of sleep that they get, and I really feel like if you have this opportunity to properly sleep, I think we should take it. And if that means reducing time on our phones, I think we should definitely do that, because sleep, it's very essential to the next day. very nicely put, रबाब, कि हम एक चीज़ जो स्लीप के वक्त क्या होता है नाज़रीन, रात के वक्त हमारे ब्रेन से केमिकल मेलाटोनिन के नाम से रिलीज़ होता है। मेलाटोनिन जब रिलीज़ होता है तो इट काइंड ऑफ रिलैक्सेस द ब्रेन एंड पुट्स द बॉडी इन स्लीप मोड। अब क्या होता है कि जब, और मेलाटोनिन ऑटोमेटिक इन रिएक्शन टू डार्कनेस, ये केमिकल जो है वो रिलीज़ होता है। तो जब हम वी आर इन फ्रंट ऑफ आवर सेल फोन और टैबलेट और इन फ्रंट ऑफ आवर लैपटॉप, तो क्या होता है उससे जो लाइट निकल रही होती है वो लाइट गिव्स अ सिग्नल टू द ब्रेन दैट इट इज़ स्टिल डे एंड इट्स नॉट नाइट, और फिर ब्रेन ऑटोमेटिकली जो मेलाटोनिन प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। जब मेलाटोनिन कम हो जाती है, ब्रेन को सिग्नल मिलता है इट्स टाइम टू वेक अप। और फिर क्या होता है, ये नोट किया होगा आपने कि जब हम डिजिटल मीडिया को यूज़ कर रहे होते हैं तो एट दैट पॉइंट, स्पेशली रात के वक्त, खुद ब खुद हमें हालांकि कितनी ही नींद आ रही हो, लेकिन जब हम फ़ोन लेके बैठे तो हम एक घंटे तक हम फ़ोन के ऊपर गुजार देते हैं और हमें टाइम का जो पता नहीं चलता, और नींद जो है बिल्कुल हमारी उड़ जाती है। फिर हम इवन फ़ोन को उठा के रख भी दें, उसके बाद भी
हमारी नींद आने में हमें टाइम लगता है, क्योंकि क्या हुआ कि वही केमिकल जिसने रिलीज़ होके हमारी नींद की हालत पैदा करनी थी, अब क्या हुआ कि वो केमिकल जो है वो रिलीज़ हो गया, बॉडी को या ब्रेन को ये सिग्नल मिला है कि इट्स टाइम टू वेक अप. व्हेन द ब्रेन हैज़ दिस सिग्नल देन फिर हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम सो जाएं. वी नेचुरली आर अनएबल टू फॉल asleep. इट्स डिफ़िकल्ट टू फॉल asleep. And this is the chemistry and physiology behind that, कि that chemical itself is reduced and now हमारे brain को तो ये signal मिला हुआ है कि it's time to wake up. तो जब when brain knows कि it's time to wake up and we are trying to make it go to sleep, then it becomes hard. It's a tussle. और फिर होता है कि we have difficulty falling asleep. हमारी sleep itself जो है वो disturb होती है और उसकी वजह से हमारा next day, चाहे वो school का day हो चाहे work का day हो, it's spoiled. हम इरिटेबल होते हैं, हमारी मेमोरी पे फ़र्क पड़ता है, हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी, जब हमारा ब्रेन जो है वेल रेस्टेड नहीं होता तो फिर क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा होता है बच्चे उसको सही तरीके से ग्रास्प कभी भी नहीं कर पाएंगे. कॉन्सेंट्रेशन जो होगी बच्चों की कभी भी अच्छी नहीं होगी अगर उनका ब्रेन जो है वो वेल रेस्टेड, ब्रेन एंड बॉडी वेल रेस्टेड नहीं है. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसके लिए बस आखिरी बात करूँगी नाज़रीन, चैलेंज तो है लेकिन इसको फेस कैसे किया जाए, कि हम अपनी सेल फोन्स और टैबलेट्स को, स्टार्टिंग फ्रॉम माई सेल्फ, इंशाल्लाह वी ऑल कैन डू दैट, कि सेल फोन्स को और टैबलेट्स को अपने बेडरूम से बाहर निकाल दें. दे शुड नॉट बी इन द चार्जिंग वगैरह जो हो रही होती है ना, उमूमन ये हो रहा होता है कि हमारा फ़ोन हमारे बेड साइड पे चार्ज हो रहा होता है, तो इट शुड गेट आउट ऑफ. अगर ये कि हमें अलार्म सेल फ़ोन से ही हमें चाहिए तो हम अलार्म जो है उसके लिए दूसरी एक घड़ी ख़रीद लें, उसमें अलार्म हम लगाएं. सेल फोन्स और टैबलेट्स को वी थ्रो देम आउट ऑफ द बेडरूम. और बच्चों के लिए हम एक काइंड ऑफ डिजिटल मीडिया कर्फ्यू हम क्रिएट कर सकते हैं बिफोर बेड टाइम. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा जो टारगेट बेड टाइम है वो 10 o'clock है कि बच्चे 10 बजे सो जाएं, तो हम 9 o'clock से उन पर कर्फ्यू इम्पोज कर दें कि 9 o'clock के बाद कोई भी सेल फोन या टैबलेट नहीं यूज़ कर सकता. डू यू थिंक रबाब, वुड यू बी कंप्लाइंट विद दैट? Yeah, I would be compliant with that. And what would be the reason? Because you really agree with me, right, that this phone is causing so many disturbances in our whole day is messed up just because of this little thing that we're using at night, and that's compromising our sleep. Akhri message Rabab, if you want to, on behalf of youth, as a representative of youth, if you want to give to the audience out there. I just want to say that the cell phone use or social media or anything, I'm not saying that we shouldn't use it at all. I just feel like we should limit our use of it so then we don't miss out on other opportunities. So because there are so many opportunities in life, and I think besides our phone that we can avail them if we can just limit our use of it. So very well said. सो इंशाल्लाह इसी मैसेज के साथ नाज़रीन हम अपने प्रोग्राम को अख्तिताम तक पहुंचाएंगे कि सेल फ़ोन यूज़, और इंशाल्लाह जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि दिस इज़ अ टॉक दैट विल कंटिन्यू. दिस इज़ जस्ट 2 aspects on health, for example, that we discussed, on the brain that we discussed last program, but in the coming programs we are going to be discussing on effects of this media on our self image, on the self image of teens, on our soul, हमारी soul के ऊपर, हमारी रूह के ऊपर सोशल मीडिया का क्या असर होता है. ये सारे टॉपिक्स दे आर स्टिल पेंडिंग टू बी कवर्ड. एंड देन फाइनली हम लोग हाउ टू अप्रोच एंड टेक दिस चैलेंज. हम कुछ पॉइंटर्स आपको गुफ्तगू के दौरान भी देते जा रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स एंड द काइंड ऑफ चैलेंजेस वी आर अप टू, वी विल एट द एंड डिस्कस हाउ टू मीट these challenges inshallah. So stay with us for the rest of the talks based on this, and we hope that we are able to bring in some youth inshallah, if Rabab is able to come next time, and you know we will inshallah, would love to have you again. And with that and with the notion that परवरदिगार आलम हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए. ये सोशल मीडिया का यूज़ भी नफ़सानी एक ख्वाहिश बन गया है, एक डिज़ायर बन गई है जिस पे हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है. और इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई तो हम इसी टूल को बेहतरीन अंदाज से यूज़ करके दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए यूज़ कर सकते हैं. इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजम के ज़हूर में ताजील फ़रमाए, और हमें और हमारी औलादों को आपके अंसार और ऐवान में शामिल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.